मैंने बेल्ट से मार खाई है, केन से मार खाई है, बैडमिंटन से मार खाई है, स्टूल फेंका है एक बार मेरे पे, मुझे याद है। आज तो कंपटीशन करते कि तू यही तो कुछ नहीं है, मैंने तो मतलब हाँ, सोटी इससे से मार मार खाई खाया है। है। वो ऐसे एपिसोड्स होते हैं आपकी लाइफ में जो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। It used to be कि अच्छा अभी तो मतलब आर्या पार है, या तो मैं जीतूंगी या तो दिवेश जीतेगा ये। I used to get really emotionally triggered when my family used to talk about a kid कि बच्चे कब कर रहे हो। One of my family member used to always stay victim card कि उसकी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है 50 साल पहले, वो आज तक वो रेडियो प्ले हो रहा है। Because I feel that there are bigger powers at play. I mean, science can't explain everything. Some people call it universe, some people call it God, some Yeah. people call it भगवान। Hello and welcome to the next episode of Let's talk about it. And आज हम डिस्कस कर रहे हैं a very important and a very heavy topic. अब बहुत हेवी है भाई। है ना, तुम देखने वाले हो तो देखना, वरना देखना ही। Okay? वरना क्या होता है, देखना वरना ही नहीं, है। देखना ही। Okay? We are talking about spirituality and therapy, both of which have played very important part in our lives. And Devesh, I have a question, a very important one. Okay. Is therapy making you overthink? Or is spirituality helping you escape from things? Or is one of them actually doing something that the other can't? ये तो पूरा एपिसोड हमारा स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। Yes. Is it actually helpful Yeah. or not? So in today's episode, we are actually going to decode what spirituality is and what therapy is from our point of view. As we are talking about it, I want to say it out loud there that ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम भी वर्क इन प्रोग्रेस में हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि we are preaching something या we are counseling something. We are just stating what we've learned from our lessons. We are also discovering as and when Ourselves. we are going with our lives. Yes. So हमारे जो भी बैगेजेस है, हमारे जो भी ट्रेड्स है, पैटर्न्स है, हम अभी भी सीख ही रहे हैं। लेकिन जितना हमने अभी तक सीखा है, आई बिलीव दैट कि लोगों को बहुत ही रिलेट करेगा और मज़ा आएगा लोगों को ये स्टोरी सुनने में। And hopefully people can take something out of this episode. Yes. And एंड सब्सक्राइब करो यार। मुझे पता चला है, मेरी टीम मुझे बता रही है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको इतनी अच्छी अच्छी डीप कॉन्वर्जेशन करने वाला कोई मिलेगा नहीं। We are only doing these deep conversations and we are going ahead and talking about such taboo topics. yeah, So- talking about something that usually people don't address. Yeah, they avoid. Yeah. So सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। What do you have to say about spirituality? Because spirituality is a very vast topic. It cannot be summed up in a one-line answer. Yeah. It's huge than we think, than we imagine. Yeah. It's sacred, it's very personal to everyone. I think how much ever we discover with spirituality, it will Yeah. keep on. We'll have more to discover. Yeah. It can't be like, oh, today I know everything about it. Never. 2 years down the line, 5 also, I'm saying a lot. Like 2 years down the line, 1 year down the line, 6 months down the line, you'll discover something new. Yes. It can't be that, oh, you know everything about the Yeah. universe Yeah. or the life that you're living. So when I started my spiritual journey, actually, before that, I used to always feel that, oh, मैं तो सही हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे को आता है जिंदगी कैसे जीना है, and what I'm doing is the right Thing to do. way to live your life. ऐसा मैं सोचती थी, cause किसी ने कोई और तरीका दिखाया ही नहीं था लाइफ में। तो आई फील दैट, ओ अच्छा, मुझे तो आता है कैसा जीना है जिंदगी, मैं तो सही जी रही हूँ, पर फिर भी कलेश हो रहे, फिर भी ड्रामा हो रहा है लाइफ में। आई यूज्ड टू नॉट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, क्यों ऐसे इतनी सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में, क्यों ऐसे सेम तरीके की चीज़ें हो रही है लाइफ में। आई नेवर गॉट दोज आंसर्स इन माई लाइफ। A lot of frustration or anger inside, a lot of responsibility and burnout from that responsibility inside, which I used to not understand ki why is this constantly happening. And when we hit our lowest moment, that is when I chose the door of spirituality. And at that point of time, when I started to understand what life is all about and how differently we can live our lives, and we have a choice to choose how to live our life, to consciously create how to live our life, is when I realized कि oh my god, ऐसा भी होता है?
मैं क्या गलत जी रही थी आज तक जिंदगी, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था लाइफ हाँ, you know में। nothing. यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील सो लिटिल, Yeah. यू फील कि तुम्हारी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी भी कोई चीज है। Yeah. तुम्हारी जो आज की जिंदगी, आज का प्रॉब्लम है, शिट में ट्रैफिक में फंस चुकी हूँ और मेरे को एक मीटिंग अटेंड करना है 5 मिनट में, ऑफ कोर्स दैट्स इम्पोर्टेंट, यस, बट दैट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये अवेयरनेस ही नहीं थी। Yeah. और ये तो मैं बहुत बेसिक चीज बोल रही हूँ। से फॉर एग्जाम्पल यू एंड मी आर फाइटिंग, एंड वो फाइट इतनी फाइट होती जा रही है, नॉन स्टॉप फाइट होती जा रही है कि हम इतना पर्सनली ले रहे हैं हर चीज को कि डू और डाई सिचुएशन बन चुका है अब। बट दैट्स नॉट, स्पिरिचुअलिटी से पहले एक्चुअली होता था ऐसा होता था ऐसा। हमारे बीच में। इट यूज टू बी कि अच्छा अभी तो मतलब आर या पार है, या तो मैं जीतूंगी या तो दिवेश जीतेगा। ये Yeah. ईगो प्ले, ईगो क्लैश होता था। Clashes and how? When I started my spirituality, I understood a lot of things. I got a lot of answers to my life as to मैं क्यों हूँ ऐसी, या मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। The biggest thing that I think spirituality teaches you is to focus on the positives of your life. It also makes you unlearn a lot of things, like shed your skin. Because till like 20... Not literally, guys. Shed your skin. Because till like 20-25, जब तक मैंने सीखा spirituality, when I got into it, I was around 25-ish. 27 के बाद. 27 के बाद. Yeah. So when I started it, it was so difficult for me because 27 years तुम एक तरीके से जी रहे हो. Yeah. तुम्हारा एक पैटर्न है, तुम्हारा एक बिलीफ सिस्टम है, तुम अंदर सोच चुके हो या दुनिया ने तुमको ये बता दिया या तुमने खुद ने सोचा है दैट आई एम नॉट क्रिएटिव। ये तो मैं फिर भी एक इमोशनल एस्पेक्ट बता रही हूँ। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स फिजिकल ऑल्सो, दैट आई एम नॉट गुड लुकिंग और आई डोंट डिजर्व इट। इट्स दैट डीप ऑल्सो। when you keep on constantly saying that, when you keep on constantly doing that, you will attract similar kind of emotions in Yeah. your life. बिकॉज द पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो हम कर रहे हैं, जैसे अगर मैं शीशे के सामने बोल रहा हूँ आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई डिजर्व, सो दिस इज वॉट द rewiring I am doing with my brain by Yeah. saying out loud, hence the things are working in my favor. Yeah, when I was doing my corporate job, तब अगर मेरे बॉस ने मुझे 9 अच्छी चीजें बोली और एक खराब चीज बोली, इट Yeah. विल रूइन माई एंटायर डे। Oh yeah. इट विल रूइन माई एंटायर डे कि ओ माय गॉड, ये कैसे रह गया, एक चीज कैसे ये इसने कैसे निकाली? नहीं मैं कर पाई, ये कैसे गलत है मेरे लाइफ में। Hmm. But not focusing on the positives, which is what we do the entire day. If we leave the house, lift time पे नहीं आ रहा, traffic हो पड़ी है, कोई रिक्शा कट मार के निकल गया, and we keep on focusing on it, focusing on it, focusing on it, Yeah. obsessing over it, not thinking the good parts of life, not thinking that, oh, I get to wake up, I get to go to my work, I have a good job, I have a stable job, I get to live with my family, I get to spend time with my husband. I think spirituality teaches you a lot of patience. It makes you zoom out a little. Yeah. And also प्रेजेंट सिनेरियो में रहने बोलते हैं। Yeah. बहुत ज़्यादा, ना फ्यूचरिस्टिक ना पास्ट बट प्रेजेंट। Because data shows that 90% of our time we keep on thinking about our past और फ्यूचर कि ऐसा होगा तो और ऐसा future. करूँगा, ऐसा and don't होगा। live in our present at all. Yeah. कि हम आज अभी इसी वक्त क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। Yeah. Even if we are showering, we are taking a shower, but we are thinking. The mind noise is constantly on. Yeah. We'll keep on thinking कि ओ अच्छा मुझे अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है। We're talking about the future right now, right? या ओ माय गॉड मेरे साथ ये हुआ था, ये मेरा इंटरव्यू कैसे गया, या 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, if there is so much trauma. So we constantly keep on not being in the present. वेकेशन पे जा रहे तो हमको घर जाना है, हम घर पे है तो हमको वेकेशन जाना है। Yeah. You're not fully present. You're not happy at the place where you are. I think spirituality teaches you that, to come back to the present moment, to be there, to live that. Because what is life? Slices of present moment, right? Yeah. Spirituality has taught me especially to focus on positives, because I used to focus a lot on negative sides of or lack of things that I have. उसके पास iPhone 17 Pro Max है पर मेरे पास तो 15 ही है, but didn't think that मेरे पास 15 है, किसी के पास 13 है। Yeah. And it used to just blow my mind how I used to think, was not being grateful for the life that I was having. Yeah, but of course you can have desires, you can have Of course. wish for a better phone, a What better are we here lifestyle. for? What are we here for? वही तो करने आए हैं।
to live this game of life, right? Yeah. Where we have desires also. Spirituality taught me not to get attached with those desires. Oh, yeah. When I get a new car, I'm so happy about it, right? I'm just so grateful, I'm happy. वही कार ठुक जाती है तो तुम्हारा पूरा जिंदगी खराब हो जाता है उसके पीछे फिर. Obviously it you'll get hurt, but not to the extent where it's harmful for you, for your stress, for your life. I think that is what somewhere spirituality teaches you. Have desires, but detach at the same time. Don't Yeah. make it your whole identity. Yeah. Sometimes we see actors or politicians or anybody just taking their role so seriously, Or taking a that CEO identity or a so, vice or a president of a CEO, company. vice president, they're saying कि अरे Labeling. मैं तो ये हूँ, मैं Yeah. तो कोई तोप हूँ. Yeah, okay, of course. But if that makes you change your behavior overall, then there is an issue. You're not the person that you are. The same, yeah. You are molding yourself according to the external scenarios that you have. I think spirituality humbles you a lot also. बहुत ज़्यादा. It shows you that you are a part of bigger things in life, and we all are connected. Yeah. You and me are connected. Earlier when we used to fight, it used to be me versus you. Yeah. But now we understand, okay, me and you and this pattern that we have. So now what? Let's zoom out. Now Yeah. what? This is what we have. This is the pattern that we have. Yeah. I think for me, spirituality is to feel a lot of emotions. मेजरली मैंने स्पिरिचुअलिटी शुरू इसलिए की थी कि ताकि मैं मटेरियल थिंग्स अट्रैक्ट कर सकूं. Yeah. और वो जो वो मेरा जाल था. बट ऑल्सो फीलिंग दैट कि यू आर पार्ट ऑफ वन कॉन्शियसनेस, इट इज़ द बेस्ट थिंग हैज़ हैपन टू मी. ये मेरी लाइफ में तब आई जब मैंने मेरा एनवायरनमेंट चेंज किया. वो सेम एनवायरनमेंट लेकर मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता था. एज सुन एज आई चेंज माई एनवायरनमेंट, अगर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहा है तो वो सेम चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. It's difficult. It's Yeah. difficult. Absolutely. We have examples all around that they are facing issues in some cases where they are not able to practice something, but they wish and want to come into this spirituality. Yeah. Spirituality also taught me to meditate, Ah, to sit with my own thoughts Yes. without any distractions. let's explain the concept of spirituality in terms of frequency, vibration, and Energy. energy. Yeah. Yes. So I think everything is frequency, everything is vibration, everything is, everything. This even this table has a frequency or vibration. Ah. So it just when you are in low vibrations, when you are not being mindful, you're not being aware. There are a lot of things that you attract which you don't want to. A lot of illness also, because if you're in low vibration, you're having resentment, you're having guilt, you're having anger, which is not good for your body. When there are such intense emotions, ये तुम्हारे body पे दिखता है. Yeah. It will show up one day or the other. It will show up. But when you sort of try and transition from low vibrational emotions to higher emotions, which is your wholeness, oneness, love, Compassion. gratitude, compassion, which are what we are born with, Yeah. which is our original वो तो setting. फिर बड़े होते होते वो चैलेंजेस तो फेस फिर करते 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 हम गिल्ट आ गया. ये तो तुमको सोसाइटी सिखाती है दूसरे इमोशंस. हाँ. वरना यू वर born with love, right? You Yeah. were born with wholeness, you were born with oneness. A kid is so joyful, right? हाँ. और इनोसेंट, इनोसेंस के साथ तुम बहुत बॉर्न होते हो. लाइफ टीचेस यू ऑल द अदर इमोशंस यू डोंट वांट टू ओरिजिनली फील. सो व्हेन यू ट्राई एंड विथ प्रैक्टिस यू कम टू द अदर साइड ऑफ थिंग्स, is when you are in the higher vibration, where you attract higher vibration things. और ये सब easy नहीं होता. Spirituality, people think that it's easy, or you journal, or that's you say some or you say affirmation. some affirmations. That's a part of it, yes. Yeah. But there are ugly side to it. Like for example, the biggest one being drawing boundaries. Yeah. When you understand that, oh, this emotion is not serving me anything. When I meet this person, there are certain types of emotion that arises in my heart, and I don't want to feel those. You work on it, but it's still there. Yeah. So you sort of start creating boundaries. You don't give them the access that can then affect you in a way which you don't want to. You're in your healing journey, right? So that's the ugly side of healing. Yeah, spirituality actually takes a lot of courage to come into spirituality, It does. because it's not for Everyone. weak-hearted people. As you said, unlearning whatever we've learned in these 32, 33 years, वो सब कुछ But काम नहीं don't you आएगा. think everything is difficult?
Like, for example, if you are in the same patterns, having the same problems, fighting the same battles, your life is difficult. When you're facing those patterns, बट एटलीस्ट ये नोन when है you're ना, fighting, हाँ, ये नोन डेविल है ना मेरे लिए. बट डेविल ही है ना. डेविल ही है. नोन हो या अननोन हो, डेविल तो है बट ना. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल नोन डेविल इज मच Easier, familiar familiar, correct. कि ये मैं ये झेल लूंगा, बट अननोन में जाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट इज द अननोन टेरिटरी. पीपल डोंट That वांट टू happens गो. with us also, right? We still do it. We still do it. Before starting this thing, we had so many unknown devils to actually deal with. Yeah. So many fears to deal with. So it still happens with us till today. It happens with us where आज भी आता है, but today we have the tools. a lot of tools to manage our emotions, manage our love, manage our energies, vibration, frequency, which one of them is meditation. By doing Yeah. meditation, because we don't skip meditation, we Yeah. do meditation Every every day. day. It has been an integral part of our lives. जब एक दिन भी ना करो तो ऐसा लगता है Your body only asks for Your it. body asks for it. Body is like bed, bhai, bed. तेको बैठ अपने शांति साथ. चाहिए अब. Just sit and breathe for few minutes or few Yeah. hours, and just you'll be fine. You know, a lot of people, like my friends especially, messages me, या फिर when they meet me they say कि तू कैसे बैठ लेता है अपने thoughts के साथ. I can't even, you know, begin to control my thoughts. मेरे तो thoughts ही चलते रहते हैं. But initially it was difficult for us also, right? Yeah. It's, It was quite difficult for us. Yeah. It's like a cricket match. yeah. You know, you fail some, you win some. Yeah. But when you eventually look back at your when journey, you practice, it's net you're practice. like, oh my god, my Yeah. game has improved so much. Yeah. It's similar. It's abhyas. Abhyas, my god. एक्सरसाइज. मतलब you keep on doing. It's like gymming. अभी Yeah. अगर Eventually बॉडी it- को it अगर अच्छा results. करना है Yeah. तो जिम जाना है. अगर दिमाग को अच्छा करना है, मेंटल डाइट अच्छी करनी है, तो उसके लिए मेडिटेशन है. Correct. दैट इज व्हाट Absolutely agreed. हम बॉडी के डाइट को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर यहाँ के डाइट को ध्यान ही नहीं देते हैं. Agreed. So for this, meditation comes in and makes you discover a lot of things which you haven't in life. Yeah. For us, so many mystical moments has happened I think with us. spirituality also taught me to be very extremely grateful for the life that I have. Oh yeah. I used to take it so lightly earlier और शुक्रान. so granted. कभी awareness के साथ सोचा ही नहीं कि oh my god अच्छी life भी है. You know, या life भी है for that matter. When you wake up in the morning and you breathe, that's such a blessing, right? Yeah. You're here or you have a roof over your head. That's such a good thing. Yeah. So it just taught me to be very, very grateful. But why did we get into spirituality and therapy? I think that question का answer is we've recorded everything in our previous episode. You can watch it here. For the new users, whoever is watching us for the first time, यहाँ पे आप देख सकते हो. And we got into spirituality when we were on the verge of getting separated. That's when we were like कि चलो, what's there to lose, guys? What there is to lose, yeah. Try Spirituality. कर लेते. यार सब कुछ ट्राई कर लिया. साम दाम धन भेद, एक ही चीज़ बची है, तो इसको भी करके देखते हैं क्या ही हो जाएगा 10,000. Magic हो गया लेकिन. So you can check out that episode and then continue this one. Devesh, I think spirituality has also taught us a lot about surrendering. Oh, the best feeling. I mean, surrendering पहले पता ही नहीं था यार. Surrender कर word नहीं ही पाते- dictionary में कर- exist नहीं कर ही करता नहीं था पाते हमारे. थे यार. जैसे you said ना in the previous line कि जो चीज़ मैंने मांगी है या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो वो जब तक मुझे मिलेगी नहीं तब तक मैं बैठूंगी नहीं चैन से. मैं आई विल नॉट सिट स्ट्रेट इफ दैट थिंग डज नॉट हैपन इन माई लाइफ. सपोज अ जॉब ऑफर, आई एम सपोज टू गेट अ जॉब ऑफर, आई एम अप्लाइंग समथिंग. जब तक वो ऑफर नहीं आएगा, ऑफर लेटर नहीं आएगा, मेरी लाइफ तिथल बिथल चल रही है. मेरे को कंटेंट क्रिएशन में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आई एम गोइंग पैरानॉइड. आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग. ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, ये क्यों नहीं हो रहा है. इतने सवाल आप खुद से पूछने लगते हो, बल्कि आप काम भी कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को ये वाइब्रेशन में रख रहे हो कि वाई इज थिंग नॉट हैपनिंग विद माई लाइफ. कि कोई चीज़ एक ढंग से मूव क्यों नहीं कर रही एक डायरेक्शन में. समथिंग पॉजिटिव आई शुड लुक, नो हो क्यों नहीं रहा. इतनी पॉजिटिव काम कर रही हूँ मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ, शांत बैठ रही हूँ, मैं लोगों से कितने अच्छे से बात करती हूँ, मैं कितनी पॉजिटिव हूँ अंदर से. बट एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग लाइक अंदर से लैक. वो फीलिंग अंदर से चेंज करनी है ना. अब नाउ आफ्टर स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट वी प्रैक्टिस्ड आफ्टर. इट्स नॉट लाइक एक दिन में आई है, इट्स हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम. नाउ इफ आई डू थिंग्स आई डोंट थिंक अबाउट इट. मैं करके छोड़ देता हूँ.
I leave it up to the higher self, higher power. Because I feel that there are bigger powers at play. I mean, science can't explain everything Yeah. in life. I mean, science is obviously a biggest thing, of course, but can't explain everything that happens in your life. Sometimes there are things which just happens, and there are right people at the right time when you meet, and your work just gets done. So sometimes you have to just surrender things. Yeah. कभी नोटिस किया होगा ना कि हम जितना एक चीज के बारे में सोचते 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 और वो होता ही नहीं फिर, होता ही नहीं, बिकॉज वी कीप ऑन थिंकिंग 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 अबाउट इट. और सेल्फ डाउट भी करने लगते हैं हाँ. कि इतना डाउट आ गया, ओ शिट वो नहीं हो, क्योंकि एनर्जीज वो दे दी ना, फ्रीक्वेंसी वो चल रही है तुम्हारी. ये नहीं सोचा कि ये हो जाएगा, छोड़ दे, ये तो हो जाएगा, ये तो मैं कर लूंगा यार, आई एम अ चैंपियन इन दिस, आई एम अ सुपरस्टार इन दिस, Yeah. ये तो मैं, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कर सकता हूँ ये. फीलिंग में चेंज आया ना, Hmm. तो ये फीलिंग में जब चेंज आता है तो अपने आप वो यूनिवर्स तुम्हारा देख लेता है कि भाई ये कॉन्फिडेंट है इतना, योर वाइब्रेशन इज सच कॉन्फिडेंट, तो वो कॉन्फिडेंट चीजें होनी है आपकी लाइफ में. Yeah. हम कंटेंट बनाते, हम ये थोड़ा ना सोचते कि शिट यार 1 लाख व्यूज ही आए, 2 लाख व्यूज ही आए, शिट यार ये आगे बढ़ नहीं रहा है. बट 2 लाख व्यूज भी है तो मतलब पूरा वेम्बली स्टेडियम भर जाता है भाई. Yeah. हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भर जाता है पूरा 1 लाख व्यूज में. दैट इज अ लॉट ऑफ ऑडियंस. Yeah. बट नाउ वी गेट मिलियंस ऑफ व्यूज, दैट इज वी आर ग्रेटफुल अबाउट. सरेंडरिंग इज बेसिकली छोड़ दो यूनिवर्स पे, छोड़ दो on the leave it up higher to- power, which probably हाँ. nobody has a hold over. Whatever can you just- call it, हाँ. you know, some people call it universe, some people call it God, some Yeah. people call it भगवान, some people call it religious. तो वो जो भी चीज़ आपको माननी है, हमारे लिए वो यूनिवर्स है, because we think that कि it's कोई तो है जो ऊपर कर रहा है. Yeah. You know, there is a higher power जो हमसे भी मतलब infinite बड़ा है. He's like looking after you. You're always taken care of. There's this very cute scene in Young Sheldon where Sheldon Oh. says that how is it possible that Earth revolves at the correct speed? Yeah, the gravity. Gravity is exactly correct. Yeah. There's sun which is rising exactly at the correct Same time. and also giving us the correct amount of sun rays, and Sunlight, yeah. there is water, there's everything. How is Earth so perfect? There must be some power. There is a possibility, right? Yeah. How is everything just perfect? Just perfect. That means that there are higher things involved. So I feel that was a very beautiful line. Although his mom asked sort of that, oh, you believe in God then, karke, or So he was like, no, I believe in mom, and that was हाँ. so wholesome. It is So the wholesome. best line यार. मेरी आंखें moist हो गई थी जब मैंने वो सीन देखा था. Yeah, Yeah. and we could relate to it. So. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. And there's another concept that we've been taught, which is detachment. Detaching from things is what we've learned. Surrendering and detaching from things. When you keep obsessing over things, say for example, if you hold the sand too tight, it's bound to just flow from your hand. Yeah. A lot of people I've seen, especially my family, keep on hoarding money. They don't spend on themselves. They keep on hoarding it, hoarding it, hoarding it. But after hoarding so much money, they still don't have money. Yeah. Whereas on the other hand, when I see people spending smartly, not obviously just going all Splurging, out or yeah. splurging, but yeah, spending or choosing their happiness or prioritizing their ease, I've seen that they are able to attract more money. Yeah. Because they prioritize themselves. They think that, okay, मेरे पास खाना बनाने का time नहीं है, I would rather keep a cook, and in that, the time taken for me to cook, I'll invest probably in my business. And I've seen that happening when you prioritize yourself, when you spend on yourself with like good intention. So I've just seen this thing that people keep on holding everything, and then that keeps on slipping from them Yeah. eventually. So we've seen to surrender whatever we wish for in life. Say for example, even if we are wishing for good health, you just wish about it, do things, of course. Because when you actually wish about it, you start doing things, you start Yeah. enabling it, and then obviously leave for the higher power to take care of it in an easier manner. If today I am trying to bag some deal, I've given my interview, I've given all of it, but if I keep on obsessing over it, it's just ruining my mental peace. That's all. Rather, I'll just surrender and say, universe, आप देख लो. जो भी हम बोलते हैं ना, भगवान जी आप देख लो, आप देख लो, मैंने आप तो मेरा देख लो, काम कर मैंने तो लिया. ये कर लिया, Yeah, बाकी आपके हाथ yeah, है. yeah, yeah. ऐसा. Yeah. So we do that, right? That's just detaching from it. Also, don't you think detachment is also with regards to a lot of like labeling? हम अपने आप को इतना आइडेंटिटी में बना लेते हैं कि मैं ये हूँ. जैसे यू सेड, यू नो, आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ एक्टर. वो आइडेंटिटी से भी डिटैच कर देना अपने आप को कि Yeah.
You are just playing a part. If we keep on taking our role so seriously, then we'll keep on fighting for it. मैं better हूँ, तू better है, but we keep on forgetting that we are all one and we've come here to do great things, all of us together. Yeah. So I think that is where the detachment comes in picture. There's one more thing that spirituality has actually taught us is this one line which is stuck in my brain, which is what you resist persists. Yeah. Oh, yes. So basically, when you resist a situation or a person, it will keep on happening with you till the time you don't learn your lesson and act differently on it. For example, I used to get really emotionally triggered when my family used to talk about a kid कि बच्चे कब कर रहे हो, बच्चे कब कर रहे हो, बच्चे कब कर रहे हो. It used to bother me a lot, and I used to give back. गुस्सा आता था वो टाइम पे. I used to give back with a lot of emotional charge on it. That means I used to resist that situation a lot. When I got into spirituality with practice, of course, when I used to actually give back, that time I was also aware of all the spiritual practices, but I had not practiced till what I've practiced today. Next is therapy. What is therapy? So first, we want to tell you that we are not therapists. Yeah. And whatever we say is from our experience and what we think about therapy. What is our POV? What did we feel? What did we learn? How it has helped us lead our lives. थेरेपी ने तो How are your therapy sessions? Because तेरे को तो करना ही नहीं था therapy. हाँ मेरे को तो करना नहीं था. व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू थेरेपी आई वाज लाइक नहीं मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है. मैं तो सब ठीक है मेरी लाइफ में. वी डोंट बिलोंग टू ईच अदर. वी आर फार अवे. मेरे को सब आता है. मेरे को सब समझता है. बट लिटिल डिड आई नो जब थेरेपी में घुसा तब जो एक एक करके इमोशंस हिट होने लगे बिकॉज थेरेपी टेक्स यू टू योर चाइल्डहुड एंड दैट इज़ द एरिया वेर यू डोंट वांट टू टॉक. इट्स सीक्रेट. इट्स लाइक ये मेमोरी जो है मैंने बहुत धुंधली हो जाती है. आपकी मेमोरी बहुत फेड हो जाती है. यू डोंट रिमेंबर योर चाइल्डहुड. आई डोंट नो वाई. मेरे साथ हुआ है या लोगों के साथ भी हुआ है. ऐसा होता है जनरली कि आपको मेजॉरिटी ऑफ योर चाइल्डहुड मेमोरीज यू डोंट रिमेंबर. यू ओनली रिमेंबर फ्यू पार्ट्स ऑफ इट. तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि So your brain actively blocks out like traumas and stuff also. Yeah. But it comes when there are triggers. we triggers plus when you're talking to a professional कि जिसको पता है साइकोलॉजिकली वो कैसे लाना है एंड देन उसको हील भी करना है. कि जैसे मुझे प्रॉब्लम था कि मुझे बहुत ट्रिगर्स होते थे कि कोई मुझे बोल देता था कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया. मुझे कोई काम देता था, मुझे प्रेशराइज फील होता था. मुझे बोलता था कि कोई आई एम नॉट गुड इनफ. तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगी चीज़ें. बचपन में मैंने ऐसी चीज़ें सुनी थी या मेरे फैमिली में किसी ने बोला होगा या दोस्तों ने बोला होगा जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था इन माई लाइफ. सो क्या बोला थेरेपी था? कि वही कि मतलब तेरे से नहीं हो पाएगा. तेरे से नहीं हो पाएगा, तू कौन है रे, यू आर नथिंग. मेरी स्कूल लाइफ में बहुत बुली हुआ हूँ तो उसमें बहुत सारी जली कटी सुनाते हैं, गालियाँ देते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में. सो यू हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स हु आर नॉट, आई मीन दे आर जस्ट, उनका काम ही होता है कि आपको लो फील करवाना, नीचा दिखाना. सो वो मेमोरीज कहीं ना कहीं आपके साथ, वो ऐसे एपिसोड्स होते हैं आपकी लाइफ में जो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं. जैसे सपोज बेसिक मम्मी पापा ने मार दिया, मैं फेल हो गया तो मम्मी पापा ने मार दिया, एग्जाम्स में मैं पास नहीं हो पाया. वो सिचुएशन को एक अलग तरीके से ले गए. यार बेल्ट से तूने मार खाई है तो तेरे को वो एपिसोड पता है कि तेरी लाइफ में तूने बेल्ट से मार खाई होगी अपने जीवन में. मैंने भी खाई है. लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो भी अगर किसी ने तुमको फंसा दिया, बट तभी कितना ऐसा लगता था ना कि ये कितना नॉर्मल है. नॉर्मल है. मतलब मैंने बेल्ट से मार खाई है, केन से मार खाई है, बैडमिंटन से मार खाई है, चप्पल से नहीं खाई है शायद. या मैंने उंगली बंद कर दी. स्टूल फेंका है एक बार मेरे पे, Yeah. मुझे याद है. बट इट्स अफेक्टेड यू. Yeah. बट लाइक जो सारे मिलेनियल्स बड़े हुए उनके लिए तो सारे नॉर्मल है. अरे इसमें क्या ट्रिगर होने की बात है, इसमें क्या ट्रॉमा की बात है, ये थोड़ी ना. आज तो कंपटीशन करते कि ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो मतलब हाँ, सोटी इससे से मार खाई है, मैंने मेरी तो उससे- स्टूल फेंक It's के मार दी nothing थी to be मेरी proud माँ. of, like nothing, there's not competition. हाँ. But if you see today's parents, they're very conscious about how they want to raise a child. Today Like it all is, yeah. millennial parents are actually very conscious about कि कैसे उनको बड़ा करना है अपने बच्चों को. They don't want to repeat what they have seen in their childhood. Yes. And
kudos to them, yeah. Yeah. But yeah, So go ahead. therapy teaches you about all the emotions. Why do I react in such a way? कि मेरा रिएक्ट करने का तरीका क्यों है? अगर मैं तेरे से गुस्सा हो जा रहा हूँ इन आर हस्बैंड एंड वाइफ बैंटर में, अगर मैं कुछ आर्ग्यू कर रहा हूँ, सडनली आप एंग्री होके मैं निकल जा रहा हूँ, या फिर मैं आई एम द अवॉइडेंट अटैचमेंट person कि if difficult conversation is happening, I want to avoid myself from this situation, and maybe I want to go for a walk, or maybe I want to play PlayStation. I don't want in that environment nobody. मुझे कोई नहीं चाहिए वो environment, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं प्रोसेस कर लूँगा, मेरा कोपिंग मैकेनिज्म अलग है उस चीज़ का. आई विल नॉट रिजॉल्व विथ यू देन एंड देयर या But एक घंटे के before अंदर. therapy तो ये तुमको आइडिया ही नहीं था. आइडिया नहीं था, तो कि- थेरेपी आपको सिखाती है कि टेक दैट टाइम, टेक दैट, you know, it's okay to pause but process also at the same But time. also therapy taught you to identify that this is what your patterns are. Yeah, this is my pattern. You know, like for me, जैसे मेरे को पहले क्या होता था कि तू जब चला जाता था, झगड़ा करता था तू, एंड मैं करती थी तेरे से झगड़ा, बट मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू आर लाइक आई नीड स्पेस एंड यू जस्ट वॉक आउट ऑफ द हाउस एंड यू जस्ट गो फॉर योर वॉक. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू फील लाइक I used to feel abandoned. I used to feel What like just happened? what just happened. But little did I know that I am the person who has anxious attachment. जो मेरे को चाहिए रहते कि तभी का तभी बात करो और खत्म करो और सुलझा लो. Yeah. बट ते को चाहिए रहते हैं कि नहीं मुझे स्पेस दो, मैं गैदर करूंगा अपने थॉट्स, क्योंकि मैं अब भी कुछ बोलूंगा तो मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा. Yeah. थेरेपी के पहले ये तो हमको पता ही नहीं था. या और कितने सालों तक हमने, जब हमें थेरेपी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, हम सुबह के 5-5 बजे तक लड़ झगड़ते थे, कुत्ते बिल्ली जैसे एक दूसरे पे जली कटी सुनाते थे, पिन पॉइंट करके ब्लेम करते थे, ईगो क्लैशेस होते थे. वी नेवर यूज टू रिप्लाई टू अंडरस्टैंड, वी यूज टू रिप्लाई टू गिव बैक. या यू नो, तेरा खत्म हो तो मैं और उससे बड़ा कमेंट लेके आऊंगा, और आई विल मेक श्योर दैट यू फील मिजरेबल, यू आर क्राइंग. यू नो, आई यूज टू मेक यू फील लाइक दैट, यू यूज टू मेक मी फील लाइक दैट. और 5 बज रहा है, आंखों में नींद भरी हुई है, आंसू निकल रहा है, लाल हो गई है आंखें, लेकिन झगड़ा सॉर्ट नहीं हो पा रहा है. बट जब थेरेपी आई तो समझ में आया कि यार स्पेस लेना है, कल भी चलता बात की है, जा हाँ, सकती है. मतलब नॉट लाइक टेक अ वीक्स टाइम, बट जस्ट टेक अ डे एंड पॉज, रिलैक्स, प्रोसेस कर लो और समझो अपने इमोशन की मैं कहाँ जा रहा हूँ. मैं, मेरी बंदी है यार ये, मैं किसको चिल्ला रहा हूँ, मैं किसको नीचा दिखा रहा हूँ. शी इज माई पर्सन, दिस इज द पर्सन आई लव द मोस्ट. हाउ एम आई रिएक्टिंग, हाउ एम आई गेटिंग सो मच ट्रिगर्ड बाय यू कि तूने मेरे को एक चीज But it बोली was तो never about me. Any it was which never ways. about you, it was about me only. It was about you, or it was about me. Again, when I was fighting also, it was about me and Yeah. my all the things that had happened in my childhood जो तू अभी कर रहा है तो मैं उस पे भिड़ रही हूँ, पर मैं कहीं और से आ रही हूँ. मेरा कोई तो ट्रिगर एक्टिवेट हो चुका है, आई एम नॉट गुड इनफ का. Yeah. आई हैड मेंशन्ड दैट आई एम द एल्डर डॉटर. तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और मेरे से ना बहुत परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन होती थी. Exactly why I try to make things perfect, and that actually is very harmful when I do it. बट जब मैं करती थी ऐसा कि जब मैं परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करती थी और तू मुझे कुछ भी फीडबैक देता था या कुछ बोलता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये चल, मेरे को तो सब पता है ना, मैं ही तो संभालते आई हूँ चीज़ें, तो तू कैसे मेरे को बोल रहा है करके. बट लिटिल डिड आई नो मैं कहाँ से आ रही हूँ. मैं आ रही हूँ जहाँ पे लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते थे वो सारी चीज़ें, या मैं परफॉर्म करती थी उनके अप्रूवल के लिए. आई डोंट हैव टू डू इट टुडे. एंड तुझे बोला जाता था ना कि ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, ये संभाल लेती है खुद को, इसको तो ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है. ये कितना सिंपल लाइन है, लेकिन ये एक्चुअली अंडरलाइन लोग समझते नहीं थे कि ये सिंपल नहीं है. उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी केयर चाहिए, उसके भी सर पे मैनिपुलेटिव है लाइफ. हाँ, उसके भी सर पे हाथ रखो, पूछो उसको कि वो कैसी है, क्योंकि वो पूरा घर का भार संभाल रही है, बड़ी बेटी है घर की वो. नो वन आस्क्ड यू. आई थिंक ये बोला भी जाता था सो दैट आई फील मोर as the rough and tough girl and handle more responsibility. Yes. I think that was said for that. When I realized today and when I look back today. Yeah. But so therapy made me realize that you don't have to be rough and tough. I think before therapy, I used to not choose myself. Yeah. I used to be overly involved in other people's drama and try to resolve them when it was not even mine in the first place. But मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन ठीक करेगा. Like for example, if mom and my younger sibling is fighting, or my mom and dad are fighting, but I forgot to realize that those are two full grown adults
who can actually resolve or not resolve their fights, and they can have their own thing. It's not your responsibility. Yes, but in the situation when I was in home, I was in a position where I used to resolve, Yeah. where I used to try and resolve, And making sure both are okay. and making sure both are happy at the cost of my mental state. Yeah. But in therapy, when I started my therapy, and I used to be like, यार, why am I so overwhelmed? Why am I so emotional? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? Is when I realized that अरे पर तुझे संभालना ही नहीं था कभी. But ये now you can choose. ये नहीं बोझ जो तू संभालना लेके आ रही थी वो तेरा था ही नहीं. था ही नहीं. तुझे लेना ही नहीं था in the first place. Yeah. And that realization is so fulfilling कि यार So freeing. so freeing कि ये अच्छा ऐसी shit भी मैं कोई चॉइस होती है. इतना बोझ ले रही थी मैं पागल थी. हाँ. You ऐसी भी know? कोई चॉइस होती है. Yeah. Do you think that हाँ. in today's day and age, everyone or most of them really need therapy in their life? What do you think? 200% they need. क्योंकि अगर आप खुद ही वो प्रॉब्लम को पैदा कर रहे हो तो आप वो सोल्यूशन को पैदा नहीं कर सकते खुद ही. मेरी ऐसी बिलीफ है कि जहाँ से आपकी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से आपकी सोल्यूशन नहीं आ सकती. यू नीड अ थर्ड पर्सन, यू नीड अ प्रोफेशनल टू टेल यू what you're doing wrong. Where are you going? What are your patterns? Yes, Where but a are good you? therapist. लोग Absolutely. I get that a lot from other people कि यार मेरी therapist ना बस ऊपर ऊपर से सुनती है, बस solution based नहीं है. There are different types of therapies. There is clinical therapy, there's counseling. So clinical तो दवाई वगैरह में जाता है if I'm not wrong. No, बट you're right. काउंसलिंग में जो जहाँ पे आपके पैटर्न्स को समझा जाता है, आपके पास्ट में जाया जाता है, चाइल्डहुड ट्रॉमास को समझा जाता है. इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस टू डू इट, यू नो, टू रिमेंबरिंग ऑल दैट कि आपके बचपन में क्या हुआ था, आपके अडल्ट में क्या हुआ था, व्हेन यू वर टीनेजर तब क्या हुआ था. सो लोगों के बहुत सारे ऐसे चीज़ें बाहर निकल के आती है और लोगों को पसंद नहीं है. दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इन इवन इफ इन फ्रंट ऑफ अ थेरेपिस्ट, जो कि Yeah. कितना कॉन्फिडेंशियल होता है. Hmm. तो And I think therapy also takes you a lot in the past. Yeah, it Because does. whatever we are facing today has some connections to how you were raised, how you were brought up, how did you live your life, has connections there. So it takes you to the past to identify what the core problem is. Yeah. It नॉट identifies ओनली your पास्ट, हमारे मम्मी डैडी के भी मम्मी डैडी, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी फोर फादर्स की जनरेशन, वहाँ से भी आप क्या थेरेपी में pattern समझ सकते हो कि समझ सकते उनका क्या पैटर्न है. इसकी वजह से योर डीएनए हैज़ बीन रनिंग. दैट्स हाउ यू रिएक्ट द वे यू रिएक्ट टुडे. यू नो, सम और दी अदर चीज़ें वो जो आपकी नहीं होंगी, जो इमोशन, जैसे मेरी ट्रिगर इमोशन थी, जब मैं ट्रिगर होता था मैं एंग्री होता था या मैं खुद को लाफा मारने लगता था. मे बी वो मेरी खुद की नहीं होगी, लेकिन मैंने किसी को देखा रहेगा करते या मेरे हुए. डीएनए में किसी का रहेगा, मेरे माँ बाप ने किया रहेगा या मेरे फोर फादर्स ने किया रहेगा. समबडी मस्ट हैव डन दैट थिंग एंड दैट इवेंचुअली केम टू मी. आई माइट नॉट हैव सीन इट, बट इट्स बॉल्स डाउन टू दैट थिंग दैट कि वो वहाँ से आई और मैंने ये कर दी. तो वो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाती है. I also feel that therapy can validate your experiences a lot. बहुत. Sometimes when we are raised in a certain way, a lot of it gets invalidated or undermined in your life. मतलब a lot of your experiences gets undermined in your life. Yeah. Therapy validates your experiences. Therapy holds that Yeah. space for you. For me, it's personally has held a lot of space. Yeah. क्योंकि मैं खुद को बहुत डाउट करती थी बिफोर थेरेपी. आई यूज टू फील दैट माई प्रॉब्लम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, क्योंकि रफ एंड टफ बोला गया है ना. हाँ. तो मुझे से लगता था अरे मेरी प्रॉब्लम्स तो ठीक ही है, मैं तो हाँ, सॉल्व कर ही लूंगी, कर ही लूंगी. मैं तो रफ एंड टफ हूँ. बट थेरेपी हेल्ड दैट स्पेस फॉर मी वेर इट सेड दैट बट रिलैक्स, you can live for yourself, you can choose yourself. I think that also therapy teaches you a lot. Yeah. And also not white and black. Yeah, biggest part of it being that I used to think everything is right or wrong. ये सच है, ये झूठ है, बस there is no gray area, there is no middle gray area कि ये भी सच हो सकता है and ये भी सच हो सकता है. I never thought about it like that. Yeah. And it was like, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ये तो मुझे नहीं पता था. You- I used to come from a lot of fairness and justice. Yeah. Devesh, I have a story to tell, okay? When I first started my therapy, she asked me a series of questions, okay? तुमको अगर तुम्हारे बॉस ने 9 चीज़ें अच्छी बोली और एक चीज़ तुम्हारी गलत बोली तो तुम क्या फोकस करोगी? आई वाज लाइक जो एक चीज़ बोला उस पर फोकस करूंगी करके.
इनोसेंट है यार, मेरी बहुत बहुत पुरानी बात है। ऐसे और भी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे मेरे को, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट के बारे में भी पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है और ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सही है करके ऐसा। सो आई सेड ये सही है बिकॉज आई वॉज वेरी फेयर एंड फेयरनेस एंड ये सारी चीज़ों में जज बनूंगी सॉर्ट ऑफ ऐसा। There was some results that had come in. We came to know that I have cognitive distortion. Oh. This is what we came to know. कि मुझे आदत है ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखने की, मुझे आदत है कि बुरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की। शी आस्क्ड मी कि बहुत तुम ऐसे राइट और रॉन्ग में रहती हो क्या, कि ये सही है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए वरना वैसा होना चाहिए, दिस और दैट ऐसा होना चाहिए फुल करके एक्सट्रीम्स में। तो आई वॉज लाइक हाँ, आई हैड जस्ट स्टार्टेड माई थेरेपी, सो आई वॉज लाइक हाँ यही तो होता है ना ऐसा। सो शी वाज लाइक पूरी दुनिया अगर ग्रे पे चल रही है तो तुम कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही हो। एंड दैट वाज द रियलाइजेशन कि हाँ यार मैं क्यों चल रही हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में, तो मैं कभी किसी को नहीं समझ पाऊंगी और कोई मुझे नहीं समझ पाएगा। ग्रे एरिया तो हर बार ही होता है, जब मैं और तू लड़ते भी है देयर इज सर्टेन ग्रे एरियाज इन बिटवीन, जहाँ से मैं आ रही हूँ जहाँ से तू आ रहा है, तेरा परसेप्शन कुछ और है मेरा परसेप्शन कुछ और है, या कोई भी इन द रोड ऑल्सो अगर गाड़ी ठुकी है तो दोनों की परसेप्शन बहुत अलग होती है, कोई भी राइट या रॉन्ग नहीं होता है सच। कोई खाई में है, कोई केयरलेसली चला रहा है। वेरी राइटली सेड। तब से मैं बहुत ज़्यादा माइंडफुल होने लग गई थी, बट दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ऐसी कितनी सारी चीज़ें मैंने खुद के बारे में डिस्कवर की जो मुझे अनलर्न करनी पड़ी इन थेरेपी ऑल्सो। एंड थेरेपिस्ट प्रोफेशनल्स गिव्स यू टूल्स on how to deal with your patterns, on how to deal with certain things, on how to next time when that scenario arises you know what to do then. And it validates your emotions also. If you want to rant about it for an hour, the therapist will listen to you. They like listening to you. They come from a place where they want to help you. But तब तक जब तक तुम अपने सिस्टम से निकालोगे नहीं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Therapy has worked on psychological and emotional level of how a complex human is, or human emotions are. And the scenario where बहुत सारी फ्रिक्शन होती थी हम दोनों में, तू मुझे समझाती थी कोई चीज और मुझे नहीं समझती थी। अरे ये तो बेसिक है यार, तेरे को बेसिक नहीं समझ में आता, हाउ कैन यू नॉट नो दिस। एंड आई एम लाइक ये बेसिक होता है, मुझे तो नहीं पता ये बेसिक होता है, क्योंकि मेरे बचपन में या मेरे चाइल्डहुड में, मेरे अडल्ट जब मैं हो रहा था और मेरे टीनेज में, मुझे तो नहीं पता ये बेसिक होता है। सबका बेसिक अलग अलग होता है। सबका बेसिक अलग होता है लक्ष्मण, सबका नॉर्मल अलग होता है। इसका नॉर्मल अलग है, मेरा नॉर्मल अलग है, आपका नॉर्मल अलग है। आई थिंक बिफोर वी गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड थेरेपी मैं एक्सपेक्ट करती थी कि तुझे तो ये पता ही होगा, ये है ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, कि नॉट गिविंग दैट बेनिफिट कि हाँ शायद उसको नहीं पता है, एंड दैट्स ओके। व्हेन यू यूज्ड टू एक्सपेक्ट अनसेड थिंग्स फ्रॉम मी कि मैं तेरे को समझ लूँ, पर तू मुझे बताएगा ही नहीं जब तक, या स्पेल आउट नहीं करेगा मेरे लिए कि ये मेरी इशू है, तब तक मैं कैसे समझूंगी। मैं अज्यूम ही कर सकती हूँ। I will have to communicate to you whatever it is going in my mind. अगर मैं मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही है मैं वो छोड़ के तेरे को कुछ और बात कर रहा हूँ, then तो you will assume things and conduct ourselves like a different person altogether. हाँ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ। फिर तो आई एम इन द डार्क। कितनी हार्ड कॉन्वर्सेशन में मैं कितनी बार कम्युनिकेट नहीं कर पाता और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अरे नहीं वो समझ लेगी, क्योंकि 5 साल हो गए ना शादी को, अभी इतना तो उसको समझना चाहिए, बिकॉज अभी तो इतना कंफर्ट लेवल आ गया है। नहीं, कंफर्ट लेवल नहीं आया है। यू हैव टू स्पेल इट आउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि बताओ जो भी चल रहा है दिमाग में। लिसन, आई वाज थिंकिंग आई थिंक वी शुड नॉट गो एट दिस प्लेस बिकॉज आई डोंट फील राइट। कितनी आसान हो गई, बता दिया उसको कि आप क्या फील कर रहे हो, एंड देन शी विल आल्सो से व्हाट्स इन योर हार्ट, बिकॉज़ समटाइम्स वी डू दिस आल्सो। तेरे को जाना है क्या ये जगह पे? हाँ, पर जाना मुझे नहीं है। माइंड गेम खेलते हैं। पर मैं तेरे से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तू भी मेरे आंसर को मैच करे। हाँ, मैच कर तू, या फिर मैं कन्विंस करूंगा तेरे को कि तू चले जाए मेरे साथ, क्योंकि मुझे जाना है। वैसा आई थिंक व्हाटएवर इज इन योर हार्ट शुड बी सेड इट इन अ वेरी corporate email sort of a manner. Because 5 years down the marriage we have realized that marriage is also like a corporate email. You have to have kindness while you speak, as discussed तो ठीक है थोड़ा, but like देवेश you remember कि ऐसे ऐसे हमने बात की थी, पर अगर तू ऐसे नहीं समझता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम we can talk about it, or we can just like जब भी तेरे को सही लगता है तो मुझे यू हैव टू हैव अ लिटिल कंसिडरेशन। ऐसे नहीं कि देवेश तेरे को याद है तूने ये बोला था, क्यों नहीं हो रहा अब तक। या यू ऑलवेज डू दिस विद मी।
that word always is थोड़ा सा yeah, triggering थोड़ा सा. to a lot of people, क्योंकि मुझे ट्रिगर होता था जब मुझे थेरेपी में समझ में आया कि जब सामने वाला बोलता है ना, तू हमेशा ऐसा करता है यार, देखो देखो मेरे को लाना ही नहीं चाहिए था इधर यार, यू Because ऑलवेज मेक मी लुक बैड. there was this one conversation with my therapist. I had gone to her and I had told her, Devesh never listens to me. And she was like, never. Is that correct? Never. He listens to you. Never. Just ask yourself. Sit with yourself and ask this. I'm like, मतलब sometimes. See, कितना अंतर है sometimes और never पे. ये वर्ड प्ले कितना जरूरी है कितना जरूरी है. कि समटाइम्स यू डोंट, सामने वाले को भी सुन के ऐसा लगता है कि हाँ मैं हाँ, कभी कभी करता sometimes. रहूंगा, बेनिफिट ऑफ डाउट But when सामने you say वाले को. never, it invalidates the other person कि यार ये क्या बात हो गई. हाँ मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ शादी में इसको यार, कुछ दिख नहीं रहा है. इसको दिख नहीं रहा है, एम आई नॉट गुड इनफ, दिस इमोशन किक्स इन, दोनों में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है कि उसको भी मैं सुन नहीं रहा हूँ और यहाँ पे मैं भी गुड इनफ नहीं हूँ. दोनों के इमोशंस ट्रिगर हो गए, सामने आ गए. अब दोनों अगर ये गुस्से में सोचेंगे तो ये लड़ाई झगड़ा ही होना है, Yeah. एंड वो बहुत आगे हद तक जाता है. थेरेपी इंडिविजुअल हो तो भी अच्छा है और कपल भी हो तो भी अच्छा है. इफ यू आर मैरिड और इफ यू नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर Or family also और for that फैमिली, matter. यस. Yeah, yeah. Go Oh with my your God. sister. Go with your. Oh my God. अगर मेरे ज़माने में अगर मैं फैमिली के साथ चला गया होता, मेरे जमाने में नहीं, आज भी तू अगर गया तो घमासान ही होगा. घमासान नहीं होगा. आई डोंट नो हाउ इट विल बी. Yeah. Just between you and me, we do therapy because we want to change, we want to unlearn a lot of things. So we are excited कि चलो ठीक है कुछ नया सीखने मिलेगा, बट फटती भी अंदर से कि यार शिट कुछ खराब बाहर निकलेगा हमारा. Work our करना inner पड़ेगा अभी. demons will come out and haunt us, and then we have to tackle them and we have to beat them by practicing something tools that they will give. Individual couple दोनों is something that we recommend You know, यार. एक बहुत मस्त चीज हुई थी. My sister, okay. My sister calls me the other day and she was like, मैं ना एक मेडिटेशन रिट्रीट के लिए जा रही हूँ. Okay. ठीक है, उसके बाद मैं मेरी थेरेपी सेशन पे जाऊंगी. सच गुड कॉन्वर्सेशन. मैं तो फुल फुल मतलब पागल हो गई सुन के कि वाओ क्या ही बोला है तूने, कि मस्त मस्त अच्छी चीजें चूज कर रही है तू लाइफ में. एंड शी वाज सेइंग दैट ऐसा मैंने मेरे पप्पा को बोला, मतलब माय डैड, ऑब्वियसली माय सिस्टर, सो माय डैड. Okay. माय डैड वाज लाइक, बेटा ये सब नहीं करने का, देख मैं कैसे जी रहा हूँ. ये वो. तू देख रहा है मुझे मैं क्या जी रहा हूँ, देख रहा है तू, देख रही है तू, ऐसा ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ऐसे फसाड होता है, ये सब करके ऐसा ऐसा. एंड माय सिस्टर वाज लाइक दिख रहा है. सो इट वाज जस्ट सो फनी फॉर मी. रोहिणी अंदर से ऐसे सोच रही है, माय सिस्टर अंदर से सोच रही है कि तेरे वजह से ही ले रही हूँ मैं. बट दिस इज व्हाट द फीलिंग इज, दैट वी आर ट्राइंग टू हील वॉट एवर वी हैव experienced in our childhood so that we don't repeat the same things. Also, you repeat what you don't repair. Oh my God, क्या लाइन बोली, प्लीज रिपीट एक बार. Repeat. You repeat what you don't repair. You'll keep on having the same circumstances, the same situations, the same patterns, keep on meeting the same kind of people till you don't repair. Repair that situation, repair the pattern, repair, identify, and do something about it. Till that time, you will keep on repeating if you don't repair. Wow. So, Devesh, to sum it up, what is the core difference between spirituality and therapy? Spirituality helps you detach from your ego. Therapy basically makes you understand about the ego. Spirituality helps you accept as is. Therapy makes you work on what things is not working according to you and change it. Spirituality guides you to be in the present moment. Yeah. Therapy is all about going into the past plus working on your patterns. Spirituality helps you surrender. Therapy makes you strategize. Spirituality is also awareness. Therapy is all about analysis of your problems, your past beliefs, everything. So, if I had to sum it up, spirituality makes you look above your life, and therapy helps you understand Yeah. your life. So has to be the balance between the two. Yeah. And this one part where a lot of people go wrong, and sometimes us too, is using spirituality to avoid therapy sometimes. So, spirituality teaches you to look at the positives. Sometimes it also happens that you keep on denying your emotions, that you fall into the trap of toxic positivity. Yeah, basically suppressing your emotion, but
outer denying the emotions, because हाँ if even if I'm feeling anxiety, I'll keep on saying नहीं 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 सब अच्छा चल रहा सब है, सब अच्छा अच्छा चल चल रहा रहा है है, सब सब अच्छा अच्छा चल चल रहा रहा है है. या That ये हम is करते भी थे कितनी बार काफी टाइम तक किया है या हमने. अननोइंगली आ जाता है बिकॉज आप इतना पढ़ लिख लेते हो अबाउट स्पिरिचुअलिटी यू अटेंड रिट्रीट्स यू डू मेडिटेशन आप सब समझ तो लेते हो लेकिन जब एक्चुअली काम करने की बारी आती है जब एक्चुअली लाइफ जीने की बारी आती है तो ये सारे लेसन्स आपको याद होने चाहिए सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स Yeah. एंड वी नेवर यूज्ड टू कभी मिस हो जाता है और स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो जाती है Yeah. कि इतना सा पॉजिटिव 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 बट अंदर की जो प्रोसेसिंग चल रही है मैं सैड हूँ अंदर से मैं फील कर रहा हूँ कि मैं डाउट कर रहा हूँ अपने आप को अंदर से बट मैं मेरे दिमाग में ये बोल रहा हूँ नहीं 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 मैं बहुत अच्छा हूँ मैं आई कैन डू दिस आई एम ब्लेस्ड आई एम वर्दी मुंह से बोल रहा है बट क्या फील कर अंदर रहा से है सोच अलग रहा है. फील Yeah. तो नहीं कर रहा हूँ अंदर से Yeah. वर्दी तो ये फीलिंग एंड माई स्पीच There's a difference. has to match if this is not coming from within then there is Then there is toxic spiritual, positivity है ना toxic positivity and spiritual bypassing yeah that you're doing. So sometimes spirituality is used to avoid therapy. We say that everything is energy, everything is energy. But then that becomes so much and used in so many situations that you forget to take accountability also. When you do this, you are spiritually bypassing. Like for example, if I have to start a project, but I keep on saying कि अरे नहीं अब तो सब यूनिवर्स के हाथ है. नहीं, but तुम्हारे हाथ में भी है. yeah take action Because you are in collaboration with the universe. yes The universe is only not doing the work, you are also doing, you are taking one step, universe is taking 50 bhale, yeah but you are taking that one step. yeah And also a lot of times if there is a toxic environment, because spirituality teaches us to accept, we accept to the extent of we start suppressing our emotions. Again, that is something which is spiritual bypassing, where Yeah. you're not addressing your emotions. also not judging who are not into spirituality मतलब मैं करता था to an extent I don't know about you but I used to कि अरे मेरे को तो अभी हैक्स आते हैं कैसे मैनिफेस्ट करना है क्या करना है मेरी लाइफ में ये क्या है ये देखना कैसा जज करता था बट मेरे को फिर मेरी आंखें खुली आई वाज लाइक नो यू नॉट सपोज्ड टू This is, जज एनीवन यार yeah, this is actually called spiritual ego. स्पिरिचुअल ईगो When you have when you have knowledge and you have ego also with Yeah, it, that you have yeah, knowledge. yeah. So all of this is sometimes used to avoid therapy. Yeah. Now people do therapy to avoid spirituality. What happens is here that sometimes people can over analyze things. People can get into the past so much where they are over analyzing every situation, every little situation, which is also there should be a balance of the both. yeah Another thing is that people sometimes do get stuck in the victim mentality when you're doing therapy, because therapy holds that safe space for you a lot, and that is safe for your well-being, for your processing of emotions. But if you're stuck in that space and if you're keeping in that victim mentality कि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो यही होता आया है, मेरी तो जिंदगी ही shit. ऐसी है. This I can so much relate. One of my family member used to always stay victim card कि उसकी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है जो हुआ था 50 साल पहले वो आज तक वो रेडियो प्ले हो रहा है सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन आई एम बीइंग विक्टिमाइज आई एम बीइंग विक्टिमाइज वो गिव अप ही नहीं कर रही है 50 साल से उनको पता है वी ऑल नो समथिंग हैज हैपेंड विथ यू ओके वी सिंपैथाइज विथ यू नाउ व्हाट गिव अप योर पास्ट नाउ एक टाइम तो आएगा जो आपको गिव अप करना पड़ेगा कब तक उसकी टूटी बजाते रहोगे 50 साल तक तो नहीं बजा सकते और यू नो सिंपैथी गेन करते रहोगे यार मेरे साथ इतना गंदा हो माई चाइल्डहुड वाज नॉट गुड माई मैरिड लाइफ वाज नॉट गुड माई बच्चाज आर नॉट ट्रीटिंग Looking मी after वेल me, yeah. ठीक है वी अंडरस्टैंड यू यू हैव गॉन थ्रू अ रियली हार्ड टाइम नाउ व्हाट इज देयर टू रेक्टिफाई उसको ठीक कैसे करोगे अभी So spirituality addresses the wounds. Whatever has happened in the past, it will address, it will validate, and it will make you feel, of course, better and give you tools on how you can work on it. Spirituality will give you that extra push. Now it's happened. Now Yeah. can you leave the story? Now what? What can we do about it? ओके For example, when we used to fight and I used to have certain type of patterns that I used to fight with you, and I got to know in therapy that okay, these were the patterns that I was following, which was happening in my childhood and it's happening right now. Whatever I went through in my childhood, I'm getting in my marriage, and I am dealing with you, fighting with you like that. I understood, but now what about it? How can we do better? So therapy gives you that tools, but spirituality also gives you on how to live a better life. या What do you think, Devesh? What is better? both are better both has equal importance in our lives
I think both of it is really important for us to ground ourselves, us to work on each other, because Yeah. we have to validate us also, and we have to look above it also, above our story also. Correct. That's what we've learned. So knowing your traumas is just like 50% डायग्नोस कि हाँ मुझे पता है मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ, मेरा चाइल्डहुड में प्रॉब्लम्स थे, थेरेपी में पता चला आपको कि अब पता है आपको अपने प्रॉब्लम्स क्या है. इट्स जस्ट 50% ऑफ डायग्नोस. अंटिल यू वर्क ऑन इट, इट्स अ डेली प्रैक्टिस. इफ डेली प्रैक्टिस इज नॉट देयर, यू आर नॉट कंप्लीटली हील्ड. जान के क्या करोगे? जान लिया तो उसके पे काम भी तो करना है, तो एक्शन तो लेना ही है ना. So if you're not taking action, it's just 50% of the work. That is And when not you work on 100%. it, and when you daily practice, when you daily understand, have deal with awareness, it's 100% there. Yeah, it's a killer combination, you know. Our take would be spirituality with therapy side by side. When you are doing this, there's no stopping. There are dal, rice के साथ, you know, having a dry sabzi. ये इसने लिखा हुआ है Probably script में. गोभी आलू की सब्जी खा लो. So that it's a full-fledged meal, you know. What does that even mean? Full-fledged है ना पूरा ये. दोनों क्यों भी. है? Has to be, no, Bisu. Protein missing है guys. फाइबर तो है. So I think why are we recommending both spirituality and therapy hand in hand is because therapy will help me understand my reactions. Why am I reacting the way I react? But spirituality will help me not be that reaction. Oh. You know, like therapy will make me understand the wound, that this is your wound, see, this is your pattern. Spirituality will just help me not touch it every day, Yeah, no, not touch not it every dig day. every day. Yeah, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है खोदना. Oh, you know? yes, yes. And sometimes spirituality teaches you meditation, and you can meditate like 10 years or the whole day, but it will just take hardly 10 seconds for me to get triggered if I don't have the tools to deal with it. We do our spiritual sessions, we do our therapy also, we do our individual, we do our couple sessions, because all of this is important for us to grow in life. All of it is important for us to know, understand ourselves more, and to understand why we are here. Nice. गुड सेशन यार, मजा आ गया सेशन करके. So कुछ ज़्यादा डीप हो गया क्या गाइस? बहुत ज़्यादा डीप हो गया ना. काफ़ी हैवी हो अगर गया. हुआ तो कमेंट में बताओ. और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो या थेरेपी में हो या दोनों में हो या दोनों में भी नहीं हो, किसी में भी नहीं हो, बताओ. स्टिल यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लेट अस नो इन योर कमेंट्स यार. बताओ हमको, हम जानना चाहते हैं. जानना चाहती है बिस्सू, मैं भी थोड़ा सा. Okay, Devesh and audience, welcome to the Chatpata segment. इतनी खुश क्यों हो रही है? क्योंकि मैं तुझे सवाल पूछ सकती हूँ, which is my favorite pastime. तेरा फनी है, क्योंकि मेरा फनी नहीं है, मेरा बहुत सीरियस है भाई. क्योंकि एपिसोड की जो ट्रीटमेंट है वो सीरियस थी, तो मैंने सीरियस क्वेश्चन लेके आया हूँ मेरे में. तो तू लेके आना, you do you. ओके फाइन, You do you. गो फॉर इट, गो फॉर इट. Okay. चल. If I had an off button. यू हैड An एन ऑफ बटन. ओके. ठीक है. Would you press it? And when would you press it? आए मिनट में. मैं तो मतलब तेरे को कठपुतली जैसा नचाता भाई. What is wrong with you, Devesh? या मैं तो कभी भी दबा देता. जब तू कुछ ज्यादा आवाज में ऊंची आवाज बात करे, बंद कर, चुप कर, मैं बोलूंगा, तू नहीं बोलेगी What कुछ. is wrong with आई एम you? सपोज्ड टू से. मतलब तू बोल रहा है कि तू अब भी करता. करता, मैं भी करता. इसको निकालो है. मेरे इसको बोलने नहीं continue देती कभी. करना है मुझे, ये सेशन ही कंटिन्यू करना बोलने है. नहीं मुझे देती चाहिए तू, नहीं. बोलने नहीं देती तू किसी को. तो आई वुड यूज दिस, हमेशा मैं करूंगा. कुछ तो इसका Without trauma even निकल thinking, गया. I will go for it. Who is not letting me speak? Should I तो ask तू one? यूज करेगा बोल रहा है ना तू. I will use. I will hold this. I will take it to my grave. Ah. Next one. Hey, I have two. अरे Hello. तो मेरा एक, तेरा एक, फिर मेरा एक, तेरा एक, ऐसा करते हैं ना. हाँ ठीक है चलो. अभी मतलब- फिर कंप्लेन करेगा, बोलने नहीं देती तू मेरे को. नहीं, मैं ऑफ दबा दूंगा ना, कंप्लेंट नहीं करूंगा. ओके. सो इफ यू कुड नो द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, वुड यू स्टिल एंजॉय इट और नॉट? Peak moment, would I still enjoy my देखो peak तेरी moment? लाइफ का फ्यूचर का पीक पता चल जाए. दिस इज वेयर इन दिस एज यू आर गोइंग टू पीक, हाँ. लाइक योर बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. अगर तेरे को पता चल गया अभी ही, अच्छा. Oh, would I still enjoy it when it would you arrives? still enjoy when और या फिर तू बोलेगी नहीं मैं एंजॉय नहीं करूंगी? नहीं, I will enjoy ना यार. Why will I not? पता चल गया ना अभी तो. हाँ, so what? But when I actually arrive at the peak moment, क्यों भाई? अगर कोई पिक्चर दिख के आती, कोई तेरे को स्पॉइलर बता देता है, यू स्टिल एंजॉय द पिक्चर? if I really want to go and watch, I will. If for example it's a ये some कैसी like ऑडियंस है? anime, हाँ? ये कैसी ऑडियंस है?
लोगों को स्पॉइलर से नफरत है। I would want to not have spoilers, of course. तो ये आंसर होना चाहिए ना तेरा कि But- मुझे मत बताओ, मैं जिंदगी जी रही हूँ एक हिसाब खुद से। ही क्वेश्चन करता है, खुद ही आंसर देता है मेरा। मेरे आंसर को कंसिडर भी नहीं किया गया है बट इधर। तेरा कितना पैदल आंसर है अरे what do you mean? कि जिंदगी का अच्छाई ही उसमें है कि ना पता चले, एवरीथिंग हैज टू बी सरप्राइज। Everything is not that deep, तेरे को guys. पता था तू मुझे मेरे से जानना है, तो तू मेरे मतलब से क्या शादी है? करेगी, इतनी बेहतरीन जिंदगी होगी तेरी, नहीं ना, ये तो हुई ना इवेंचुअली, तो अब मजा आ रहा है ना जीने में। यही अगर तेरे को 20 साल में पता चल जाता कि यार क्या औसम जिंदगी होने वाली है तेरी, तो मैं फिर भी सिलेक्ट करूंगी जिंदगी वही का चीज, मजा ही मतलब- निकल जाता है ना, टेस्ट ही निकल जाता है। व्हाट इज द पॉइंट टू नो एवरीथिंग बिस्सू? But the question was if I knew it. If. हाँ। So if मतलब if I knew it, I would still live it, right? इसको बस इसके तरीके का आंसर नहीं मिला, so he will reject my answer. Okay, I will give you minus points now. Wait. Okay, if I wasn't your wife today, टुडे। would you still date me? आज हम अगर कहीं पे क्लब पे मिलते, हाँ। तो तू मुझसे फ्लर्ट करता क्या? हाँ, मैं सिंगल होता तो करता ना। मेरे सारे चीजें जान चुका है तू, ठीक है? कि जान मैं चुका हूँ कि जानने वाला हूँ। नहीं जानता है तू मुझे, Okay. मतलब उस मोमेंट पे नहीं जानता है, But we are still But you friends? know- नहीं, you're not friends, Okay. you're strangers only, but with the same qualities that I have today. Okay. I'm that person. Okay. So would you still Yeah, I date would me? date you. Yeah, I would date you. Really? I would date you in 50s and 60s and 70s also. हाँ, I think I can date you. With an off button, na? Yeah, But, that's another question. We are only allowed one. Thank you. Last question from Divesh. Okay. Better be a good one. Oh my God. मैं डीप है he's थोड़ा looking यार, at मैं it. थोड़ा वैसा नहीं है कि मैं मेरी थोड़ा, आंसर्स डीप नहीं है, खैर। मैं बताऊंगा ना फिर आंसर, तू नहीं दे पाई तो। If your biggest fear disappears, what excuses are you left with today? Oh my God. If my biggest fear Disappears, गायब ही हो गया। से थैनोस ने चुटकी बजा दी, तो are you still going to talk about your excuses? I mean, no, of course not. If I had to give a deep answer to it, हाँ। fears होगा तो भी I'll have to not give it as excuse, but still like face it and move ahead of it with eventually, as in someday. आज नहीं तो कल you'll have to face your fears. But अगर fears गायब ही हो गए तो there is nothing to hold me back any which ways, right? But every person has fear, and it takes a lot of courage to actually face it. Yeah, So yeah, no. beautiful. He approves. Oh my God. Thank you. Thank you. Tathastu.